Hi my beauties, welcome back to my channel. Today's video is gonna be totally different on my channel. I've got so many suggestions and requests to create a Holi hack video. So that's why only I am shooting it. In today's video, I'm gonna share life-saving hacks for this coming Holi. If you wanna know all the hacks which I'm gonna share, so please keep watching the full video. Don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you'll never miss an update whenever I post a video. I believe this should be useful for everyone. So maybe few of my viewers will be like who doesn't understand English. So I'm going to record this video in Hindi. As we all know, the Holi is festival of joy and color. But for our skin and for our hair, sometimes it becomes, quite harmful. For saving that, I'm gonna share a really useful tricks here. Use organic colors, which is less harmful for our skin and hair. But obviously you cannot control others. So without any further delay, let's begin. मैंने अपने हैक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन, जब आप होली खेलने जा रहे हो, so before that you have to take few precautions. And next, like आप जब होली खेल के वापस आ गए हो, then also there are few things. अगर आपको कोई ज़्यादा हार्श कलर लग गया है, so you can get rid of that. Tip number 1, to protect your hair, आपको अपना हेयर ऑयलिंग करना है बिफोर गोइंग आउटसाइड. अगर आपके स्कैल्प में कलर इकट्ठा हो जाता है तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर गेटिंग इट आउट. अगर आप अवॉइड करते हो कि आपका स्कैल्प ऑयली ज़्यादा ना हो, तो यू कैन प्रेफर एनी नॉन स्टिकी हेयर ऑयल बेस्ड ऑन कोकोनट ऑयल. वो हेयर ऑयल लेके अच्छे से मसाज करना है स्कैल्प में. इफ यू आर अ मैन, then it's okay, you can just leave your hair after massaging it or oiling it. And if you are a woman, then you have to make a French braid or a really high bun, so that कि जब भी आप होली खेल रहे हो, you have to make sure that it does not get into each and every of your hair. So tip number 2 is आप cotton buds लेके अपने कानों में डाल लो. टाइम्स पानी कानों में चला जाता है, को प्रॉब्लम्स हो सकती है. अगर ज्यादा कलर यहाँ पे जाता है तो इट्स ऑल्सो हार्ड टू क्लीन इट. सो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे एक कॉटन बर्ड्स यूज कर लो फॉर सेफ्टी रीजंस. Tip number 3, you have to protect your eyes as well. If you can wear glasses, that is very good. Like आप अगर चश्मा लगाते हो, so it will protect your eyes from the color. But if not, you can use rose water. So you can use 2 drops of rose water, like अपनी आंखों में डाल लो. Second step is कि आप गुलाब जल को कॉटन पैड्स में लगा के अपनी आंखों पे अच्छे से उसको for 2 minutes रख के रेस्ट. उससे क्या होगा, अगर आपकी आंखों में कलर जाता भी है तो your eyes won't irritate. Tip number 4, you have to protect your nails also from the color. I would suggest to apply any dark shade nail paint to your nails. अगर आपके बड़े nails हैं like me, then apply 2-3 coats over nails, and also inner nail में अंदर भी आपको लगाना है. And to protect the cuticles, like the skin जो इधर है, you have to apply castor oil. आप एक कॉटन में लेके to massage it well, so that क्या होगा कि अगर यहाँ पे ऑयल का एक लेयर रहता है, मसाज करने से योर फिंगर्स विल सोक दैट कैस्टर ऑयल, और वहाँ पे जब भी कलर जाता है इट वॉन्ट गेट इनटू योर स्किन. टिप नंबर 5, whenever we play Holi, we play it outside, which means we are playing under the sun. So sunscreen is a must. तो जब भी आप होली खेलने के लिए निकल रहे हो, make sure you have applied SPF 50 to 60, minimum SPF 40 sunscreen to all over your skin to avoid getting burned from sun. So tip number 6 is you have to avoid satin or silk or any other fabrics, because when you are under the sun they get more heated and आपकी skin पे rashes आ सकते हैं because of आप बहुत ज़्यादा देर तक धूप में और पानी में हो. I would recommend you to wear the cotton fabrics only when you are outside and playing Holi. Tip number 7, कलर से स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए you have to grease out somehow. So for that आप कोकोनट ऑयल
एंड कैस्टर ऑयल का मिक्सचर बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग 2 tablespoon ऑफ कोकोनट ऑयल, देन यू हैव टू एड 1/4 tablespoon of castor oil. So mix it well and apply over all your skin. Coconut oil have some ingredients which protects your skin from sun, and it has very good ingredient to moisturize your skin as well. Castor oil is really thick oil, so जब भी आप उसको skin पे लगाते हो, it will be very easy to remove. So after you have done with your Holi. Tip number 8. So for your face, I would recommend to take extra care of your face whenever you are going out to play Holi, because we all know that colors are really harmful for our skin. So you can do one thing. You can take a little bit of curd and massage it to your skin of about like 2 to 3 minutes, and then wash up your face and apply the same coconut and castor oil. दही में मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये आपके पोर्स को प्रोटेक्ट करेगा, कलर बिल्कुल ऐसे आपके स्किन में नहीं जाएगा. अब जब आप होली खेल के वापस आ चुके हो, देन देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू टू कलर उतारने के लिए. तो फर्स्ट थिंग, अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा कलर आ गया है, देन यू विल गो फॉर शैम्पू. इफ यू हैव नॉट टाइड इट वेल, सबसे ज्यादा ये डैमेज होता है. आप एक बॉल में कर्ड लेके जाओ एंड अप्लाई इट आपके बालों में एंड लीव इट फॉर 3 to 4 minutes एंड देन वॉश इट ऑफ. कलर खेलने से इट बिकम्स वेरी रफ. सो क्या होता है कि बालों का मॉइस्चराइजर आपके वापस आ जाएगा, प्रॉपर कंडीशनर एंड दिस कर्ड का अगर आप मास्क लगाते हो. अगर आपके फेस पे कलर आ गया है, देन प्लीज डोंट स्क्रब योर फेस जस्ट आफ्टर प्लेइंग होली, बिकॉज ऑलरेडी कलर लगा फेस पे बहुत ज़्यादा रफ स्क्रबिंग हो गया है. डोंट अप्लाई स्क्रब आफ्टर होली बिकॉज योर स्किन में गेट इरिटेटेड, वेरी इरिटेटेड. अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आपको रैशेस भी हो सकते हैं, पैचेस भी आ सकते हैं. ट्राई टू यूज एनी जेंटल फेस वॉश विच यू आर हैविंग. 3-4 घंटे बाद अप्लाई अ कर्ड मास्क अगेन. कर्ड में या फिर मलाई से थोड़ा सा इसको आप अच्छे से मसाज करके वॉश कर लो. टिप नंबर 13, यू कैन ऑल्सो यूज अ फेस मास्क, प्रेफरेबली इन नेक्स्ट डे. एक फेस मास्क बना सकते हो जिसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल. अप्लाई इट फॉर 10 to 15 minutes, मैक्सिमम 15 minutes. एंड जब भी इसको बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना है, जब भी वो थोड़ा थोड़ा वेट होता है, जेंटली मसाज एंड रिमूव इट. Then wash your face using any cold water. Or if you want, you can use charcoal mask as well. बहुत ज़्यादा कलर आ गया है और it has become very dirty, then you can use a charcoal mask. Because charcoal mask का जो सबसे अच्छा benefit होता है that it sucks out all the dust. And last thing which I would like to say, guys, please play it nicely. Don't hurt anyone. Don't get hurt. Celebrate it. Don't make it dirty. I hope my hacks will help you, and thank you so much for watching. I love you guys so much. Bye bye.